औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट लिया था फ्रेज़ के बारे में कि इसकी अक़साम क्या है, फ्रेज़ क्या है और ये क्या काम करता है, हाउ इट फंक्शंस। हमने 2 लेक्चर्स इस पर रिकॉर्ड किए हैं और ये तीसरा लेक्चर है जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। So let's go for the lecture 3 on phrase, and this is adverbial phrase. So adverbial phrase, what is adverbial phrase? सबसे पहले हमने ये जानना है कि adverbial phrase क्या है with example. So example से आप लोगों को और भी इस चीज़ को समझने में आसानी होगी. The definition of adverbial phrase is an adverbial phrase is a group of words. ये भी words का क्या है, एक group होता है that function as an adverb, जो as an adverb काम करता है। मतलब ये भी एक अल्फाज का एक मजमू होता है जिसका काम क्या है, it modifies adverb, it modifies adjective or it modifies another adverbial phrase. So here we have as the examples of an adverbial phrase, and they are, फॉर एग्जाम्पल, असद विल सिट इन साइलेंस की जो असद है यहाँ पर जो इन साइलेंस है ये असल में एडवर्बल फ्रेज है और कहते हैं कि असद विल सिट इन साइलेंस। सो दिस द होल दिस इन साइलेंस एडवर्ब इज मॉडिफाइंग सिट कि वो किस तरह बैठता है। The adverbial phrase in silence is functioning as an adverb, और ये in silence जो है ये as an adverb काम कर रहा है इस sentence में। और ये क्या है, it is actually an adverb of manner। ठीक है कि how, ये जवाब आपको देता है how का। It tells us how असद said, कि असद किस तरह का बैठता है। So actually this is an adverbial phrase of manner. Compare the examples above with these examples, like Asad will sit quietly. यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि फ्रेज बनता है कैसे। फ्रेज सिंगल वर्ड कैन नॉट बी अ फ्रेज, कि एक सिंगल वर्ड जो होता है वो फ्रेज नहीं हो सकता। अगर वो या एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन प्रोनाउन सब कुछ हो सकता है, लेकिन फ्रेज नहीं हो सकता। फ्रेज ही अल्फाज का मजमुआ होता है, ये बात आप अपने पल्लों से बांध लें। दिस इज अ नॉर्मल एडवर्ब, यानी इसमें जो है क्वाइटली ये भी एडवर्ब है, बट दिस इज अ सिंपल एडवर्ब। दिस एग्जाम्पल हैज बीन इंक्लूडेड टू प्रूव, ये इसके लिए प्रूव करने के लिए इंक्लूड किया गया है that in silence is an adverb, की जो in silence है ये adverbial phrase है, और जो quietly आ गया है, मतलब quietly और in silence मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन जो morphologically हम देखें तो quietly जो है it stands a simple adverb, while in silence it stands as adverbial phrase. चलो आगे चलते हैं। I will sit like a monk mediates, right? uh, this is an adverbial clause, yani I will sit like this is this is the adverbial clause, yani I will sit like a monk, या ये जो like a monk mediates है ये पूरा जो एक clause है, क्योंकि इसमें जो है mediates ये इज अ वर्ब काम कर रहा है, और जो सब्जेक्ट है इसमें monk, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में होते हैं किसी फ्रेज में, तो फ्रेज में या सेंटेंस में, तो वो क्या बन जाता है, वो क्लास बन जाता है। और ये जो द होल लाइक अमॉन्ग मीडिएट्स, ये जो एडवर्बल क्लास है ये मॉडिफाई करता है वर्ब सेट को। ठीक है, अब दिस इज एन एडवर्बियल क्लॉज, इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट क्या है, मॉन्क है, एंड अ वर्ब मेडिएट्स, वर्ब जो है वो मेडिएट्स, इसलिए ये क्लॉज बन गया। एंड एग्जांपल्स अबव, यानी जो ऊपर वाला एग्जांपल है, ऑल द एडवर्ब्स टेल अस, तमाम जो एडवर्ब्स है वो हमें ये बताते हैं हाउ द पर्सन विल सिट, कि ये जो बंदा है ये किस तरह बैठेगा। They are all adverbs of manner, ये सारे क्या है, adverbs of manner से, because it answers you of the questions how,
when used to modify a verb and adverb including an adverbal phrase. इसमें adverbal phrase भी हो कि उसको modify करता है. And an adverbal clause will usually describe when, where, how, why something happens. यानी ये जो questions है WH questions, इसका जब जवाब देते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो adverbal phrases ही होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. अब यहाँ पर कुछ अक़साम हैं इसके, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो इसको अब हम आगे लेके जाते हैं. सो व्हेन, व्हाट इज व्हेन, एंड इट इज एक्चुअली द एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम. यानी व्हेन, जब व्हेन की बात होती है तो ये असल में टाइम के बारे में पूछा जाता है. एन एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम स्टेट्स, जो एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम होता है वो ये बताता है व्हेन समथिंग हैपेंस, कि ये जो कुछ भी हुआ है ये कब हुआ है. यानी ये जवाब देता है कब का. और हाउ, या कैसे, हाउ ऑफन या कितना, इसका जवाब देता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट इन अ मिनट, राइट. सो एक्चुअली आई विल डू इट, दिस इज अ फ्रेज, अ क्लॉज, इन अ मिनट. ठीक है. सो इन अ मिनट यहाँ पर इस सेंटेंस में जो है ये क्या है, ये एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम है, क्योंकि इसमें टाइम के बारे में ही बात होती है कि मैं ये कितने मिनट्स में या कितने वक्त में ये काम मैं करूँगा. एट आंसर्स ऑफ व्हेन या हाउ का जवाब देगा. आफ्टर द गेम द किंग एंड pawn go into the same box. आप जहाँ पर ये जो ब्लैक में लिखे गए हैं ये क्या है, ये एडवर्बल ऑफ फ्रेज या जो मेन चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कशन होती है, ये वही चीज़ें होती हैं. इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं. अगर मैं कोई चीज़ बोल भी जाऊँ तो आप खुद यहाँ से अखज़ कर सकते हैं कि ये फला चीज़ जो है वो क्या है, ये फ्रेज है या क्लॉज है या वटेवर जिसके बारे में बात हो रही हो. आफ्टर द गेम, ऑफ ये जो है आफ्टर द गेम, द किंग एंड pawn go into the same box. जो pawn और king होता है वो सेम बॉक्स में जाते हैं. ठीक है, वहाँ पर जो आफ्टर द गेम है, इट मॉडिफाइज द किंग एंड pawn go into the सेम बॉक्स, इस चीज को मॉडिफाई करते हैं. सो एक्चुअली दिस इज एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम, यानी गेम, आफ्टर द टाइम, गेम के बाद ये भी टाइम जाहिर करता है. डू नॉट वेट फॉर द लास्ट जजमेंट, इट टेक्स प्लेस एवरी डे. की जो काम है हाउ ऑफन, मतलब एवरी डे ये काम होता है. सो एवरी डे यहाँ पर ये क्या है, एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम हो गया. इन आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन व्हेन. अगला जो है वो है वेयर. एंड वेयर इज एक्चुअली एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस. ये जो जगह के बारे में जब बात होती है, यानी उसको मॉडिफाई करते हैं और ये जवाब देता है क्वेश्चन वेयर का. एंड एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस स्टेट्स, ये हमें एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस ये बताते हैं वेयर समथिंग हैपन्स, कि जो कुछ भी हुआ है, कुछ हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है. यानी ये हमें जवाब देता है किस सवाल का, कहाँ का, उर्दू में कहाँ का, ए अलिफ अनुगुन्ना कहाँ. For example, I used to work in a fire hydrant factory. You could not park anywhere near the place. So यहाँ पर जो anywhere near the place जो है ये मॉडिफाई करता है इस नाउन को, यानी पार को मॉडिफाई करता है. ठीक है. सो ये क्या हो गया, एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया, यानी जवाब आपको वेयर का जवाब देते हैं, यानी कहाँ का जवाब देते हैं. Opera is when a guy gets stabbed in the back and instead of bleeding he sings. यानी बका को छोड़ दे यहाँ पर जो है in the back. So ये भी आपको जवाब देते हैं, मतलब where in the back. इसका जवाब क्या है, where a guy gets stabbed. So your answer should be in the back, यानी जगह को मुतय्यन करते हैं या उसके तरफ इशारा करते हैं. सो एक्चुअली ये क्या हो गया हमारे साथ, ये एडवर्बल फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया. और इन इट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन वेयर. अब आते हैं अनदर के तरफ, वो है हाउ, कैसा, किस तरह. दिस इज एडवर्बल फ्रेज ऑफ मैनर, यानी ये मैनर के साथ इसका ताल्लुक है. एंड एडवर्बल फ्रेज ऑफ मैनर स्टेट्स, एडवर्बल फ्रेज ऑफ मैनर जो होता है वो आपको ये बताता है हाउ समथिंग इज डन, के ये काम किस तरह हुआ. व्हाट वाज द मैनर ऑफ the word. Examples, he would always talk with a nationalistic tone. So जो टोन है वो मैनर के बारे में आपसे हाउ ये बताता है कि किस तरह, ये किस तरह क्या होता है, ये मैनर असल में होता है. सो
वो जो है वो हमेशा नेशनलिस्टिक टोन में बात करता है. सो विद अ नेशनलिस्टिक टोन, सो जब ये विद अननेशनलिस्टिक टोन जो है ये क्या हो गया, ये एडवर्बल फ्रेज ऑफ मैनर. ही सिंग्स इन अ लो रजिस्टर, वो जो गाता है तो लो रजिस्टर में गाता है. ये जो म्यूजिक का अपने रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर के होते हैं वो लो रजिस्टर में. सो इन अ लो रजिस्टर, ये यहाँ पर एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम हो गए. इट आंसर्स यू ऑफ द क्वेश्चन हाउ पीपल हु से दे स्लीप लाइक अ बेबी यूजुअली डोंट हैव वन. ठीक है. सो लाइक अ बेबी जो है एक्चुअली इट मॉडिफाइज दे वर्ब स्लीप, यानी ये स्लीप को, स्लीप जो ये वर्ब है इसको मॉडिफाई करता है. यानी पीपल कहते हैं दे स्लीप कि वो सोते हैं. सो किस तरह सोते हैं, हाउ दे स्लीप. ठीक है. सो दे स्लीप लाइक अ बेबी. सो the adverbial phrase of manner modifies the questions how they sleep. अब आखिरी जो है ये है why, and this is adverbial phrase of reason. ये adverbial phrase of reason and it answers you of the question why, यानी आपने reason देना होता है कि why ये काम क्यों ऐसा हुआ. and adverbial phrase of reason states, ये आपको ये बताता है why something is done, कि ये जो कुछ भी हुआ ये क्यों हुआ, यानी ये आपको जवाब देगा क्यों का. he went to the island, वो आइलैंड चला गया. क्यों? to find gold. ठीक है, कि वो जो गोल्ड है उसको पा सकें. तो फाइंड गोल्ड जो यहां पर है ये, इट इज एक्चुअली द रीजन दैट व्हाई ही वेंट टू द आइलैंड, बिकॉज ही वांट्स टू फाइंड गोल्ड. ही प्लेस अप टू इम्प्रेस हिज क्लासमेट्स. ही प्लेस अप क्यों? टू इम्प्रेस हिज क्लासमेट, अपनी क्लासमेट्स को इम्प्रेस करने के लिए वो खेलते हैं. यानी ही प्लेस अप, वो खेलते क्यों? टू इम्प्रेस, यानी द रीजन ये है टू इम्प्रेस हिज क्लासमेट्स, कि वो अपनी क्लासमेट्स को इम्प्रेस कर सके. सो एक्चुअली टू इम्प्रेस हिज क्लासमेट्स, दिस इज द रीजन ऑफ द क्वेश्चन व्हाई, एंड दिस इज एक्चुअली आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई. वी टेल आवरसेल्फ स्टोरीज, हम अपने आप को कहानियां सुनाते हैं. क्यों? व्हाई वी told, or why we tell ourselves stories, because we want to live. Yeah, in order to live, this is the adverbial phrase of reason. So ये जो तीन हैं इन एग्जांपल्स में, ये हमारे साथ ये क्या है, adverbial phrase of reasons है. So ये थे एडवर्बल फ्रेज के बारे में. अब आते हैं कि फॉर्मेट, एडवर्बल फ्रेज के फॉर्मेट्स क्या है. हियर आर 3 कॉमन फॉर्मेट्स फॉर एडवर्बल फ्रेज. एडवर्बल फ्रेज के लिए वी हैव 3 फॉर्मेट्स, एंड दे आर, the first one is prepositional phrase. That a prepositional phrase is headed by preposition. क्योंकि इसके नाम से जाहिर है कि अगर prepositional आया है तो इसका मतलब है कि it is headed by the preposition. अगर ये नाउन फ्रेज आ जाता है तो हम कहेंगे कि इट इज हेडेड बाय नाउन. अगर ये एडवर्ब आता है तो हम कहेंगे कि इट इज हेडेड बाय एडवर्ब. अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो हम कहेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज इज हेडेड बाय एडजेक्टिव. लाइक, इन, ऑन, नियर, बाय, विद, ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशंस के. फॉर एग्जांपल, ही वाज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. Where? So in the corner. He was standing, वो खड़ा था, यानी where he stood, where he was standing. So he was standing in the corner. So in the corner is the answer to the question where. She is winning without trying. ठीक है. सो इट एक्चुअली आंसर्स यू ऑफ द क्वेश्चन हाउ. सो शी इज विनिंग, वो जीत रही है, विदाउट ट्राइंग, बगैर किसी मेहनत के. सो विदाउट ट्राइंग इज एक्चुअली द prepositional phrase. Without is actually this is prepositional, so we would say that this is a prepositional phrase. So this is one of the format of the adverbial phrase. Infinitive phrase जो दूसरा है वो infinitive phrase है. An infinitive phrase is headed by an infinitive. For example, to play, to jump. For example, she went to Florence, कि वो फ्लोरेंस चली गई, या she went to Islamabad. Why? The question is why? To paint, कि वो पेंट कर सके. So जो to यहाँ पर है या ये आपको infinitive case बताता है कि infinitive case है. Fill in this form to join. ये जो फॉर्म है इसको फिल करें. क्यों? Why? To join और क्लब, कि आप क्लब को ज्वाइन करें.
सो ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। एन एडवर्ब विद ऑल इंटेंसिफायर, जितने भी इंटेंसिफायर्स है वो एडवर्ब। एन एडवर्ब विद इंटेंसिफायर फॉर एग्जांपल वेरी, एक्सट्रीमली, रियली, ये सारे क्या है, ये इंटेंसिफायर्स है वर्ब में। As also in adverbial phrase, for example, he answered you how very quickly. So it's actually this is intensifying the uh, uh, the clause he answered, right? She danced how she danced extremely beautifully, बहुत खूबसूरत, बहुत, ये जो बहुत है ये इंटेंसिफायर है। ये इंटेंसिफाई करता है, किस चीज़ को जोर देता है, किस चीज़ को ब्यूटीफुल या जो वेरी है ये किस चीज़ को इंटेंसिफाई करता है, क्विकली को इंटेंसिफाई करता है। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ adverb within intensifiers. There are of course other formats, यहाँ पर और भी formats है। For example, we arrived, हम पहुंच गए, when it actually answered to the questions when, a day later than expected, जो expected डेटा से एक दिन बाद, so ये आपको जवाब देता है when। I paid him every week, I paid him, मैं उसको pay करता हूँ, how often, so every week, it answers you आपने question how often। if you have a group of words that is functioning as an adverb, अगर आपके पास ग्रुप है, अल्फाज का मजमुआ है, दैट इज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, जो एज एन एडवर्ब काम करता है, एंड दैट डज नॉट फीचर अ सब्जेक्ट, और जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, एंड अ वर्ब, और इसमें वर्ब नहीं होता, मीनिंग इसका मतलब इट इज नॉट एन एडवर्बल क्लॉज की एडवर्बल क्लॉज नहीं है, बिकॉज एन एडवर्बल क्लॉज नीड्स एडवर्ब एंड they subject. So if you don't find both of them in this sentence, so it means that this is not an adverbial clause. Actually this is, then you are looking at an adverbial phrase ki you are dealing with adverbial phrase. It was all about adverbial phrase, the formats of adverbial phrase, and the different types of adverbial phrase. This was the third lecture. This is the third lecture on phrases. I hope that you may have understood what I have said, what I've tried to explain in 2 or 3 languages. The first language is English. The second is the Urdu and Hindi, because they both of them are extremely, likely they are the same when we in spoken base. So if you people have any questions regarding this lecture, so please jot down your questions, your queries in the comment box below. If you have suggestions, so please suggest me something in the comment box. Please like this video, subscribe to the channel, watch this video, and share this video with your people, and like and comment this video. You must do this, and I will be highly obliged, I will be highly thankful to you people. So thank you very much, and to be continued these lectures, because we have more uh, 11 to 12 11 to 12 lectures on phrase. So please tune with us, stay with us, be blessed. Allah Hafiz.